Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the rank improvement course on EMFT lecture number 2, that is Vector Calculus Part 2. So, beta, yesterday I covered the basics of the vectors. I covered the coordinate systems, and we also saw the differential calculus part of vectors. That is, we saw the gradient, the divergence, and the curl. So first of all, beta, if you have any doubt related to what we covered yesterday, please tell me. किसी को कोई भी डाउट है जो चीजें हमने कल कवर की थी तो बताइए. Everything is well and good. चलिए. So let me review what we covered yesterday. I covered the concept of position vector. When we draw a vector from origin to a point, it is called position vector. We covered the concept of unit vector. When you divide a vector by the magnitude, it is called unit vector. So its magnitude is 1. It is used for direction. Examples are I cap, j cap, k cap. Then equal vectors which have the same magnitude and the same direction. Null vector which has a 0 magnitude, there can be any direction. Parallel vectors which have the same direction but magnitude may be different. Anti-parallel, opposite direction. When we take minus a vector, it means we are reversing a vector, that is magnitude is same, direction opposite. Concurrent, all the vectors having the tails at the same point. Coplanar vectors, vectors that lie in the same plane. Orthogonal vectors, which are perpendicular to each other. Now, when we multiply a vector by a scalar, the length changes by a factor of k, the direction remains the same. For addition, subtraction, we saw triangle rule, parallelogram law, polygon law, and component method. In component method, I told you, add each and every component one by one for the two vectors. Displacement vector is the final minus initial position vector. We saw the dot product, A dot B is mod A mod B cos theta. It is commutative, it is distributive. How do we calculate dot product? Using sum of product. Multiply each component and then take the sum. For orthogonal vectors, the dot product is 0. Cross product, AB sin theta n cap, where n cap is perpendicular to A and B. It is anti-commutative, that is A cross B is minus B cross A. And if two vectors represent two sides of a parallelogram, then the cross product will give you the area of parallelogram and half of the cross product will give you the area of triangle. How to calculate? Using determinant. Okay, using this determinant. Scalar triple product A dot B cross C, it gives you the volume of parallelepiped, and vector triple product is back minus cap. Component of A along B is A dot B cap. Okay. Beta, PDF will be provided to YouTube students under free download section. Now we saw there are three coordinate system: Cartesian, cylindrical, spherical. In Cartesian, the three coordinates are x, y, z, and the unit vectors are ax, ay, az. Cylindrical, rho, phi, z. The unit vectors are a rho, a phi, az. Spherical, r, theta, phi. Unit vectors are ar, a theta, a phi. Now, x equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi, z is z. For Cartesian and spherical, x is r sin theta cos phi, y is r sin theta sin phi, z equal to r cos theta. ठीक है. अंकित भाई कर सकते हो RIB से एनालॉग. ठीक है. Now, these are the differential length, differential area, differential volume. For Cartesian, dx ax, dy ay, dz az. For differential area, take the cross product of two differential length to find differential area. Volume is the product of three elements dx, dy, dz. Similarly, d rho, a rho, rho d phi, a phi, dz, az. Take product of two to find the area vector in the third direction. And dv is rho, d rho, d phi, dz. Then in spherical, dr, r d theta, r sin theta, d phi. Again, when you multiply the two, you get the area vector in the third direction. And dv is r square sin theta, dr, d theta, d phi. Okay. Now, gradient is del by del x, del by del y, del by del z.
For cylindrical, del by del rho, del by del phi, del by del z. For spherical, del by del r, 1 by r, del by del theta, 1 by r sin theta, del by del phi. Okay. Then this is divergence, and then we take the curl. So I told you the general method also, beta, for finding the gradient, divergence, curl, and Laplacian. There are two null identities. That is, curl of gradient is 0. The second one, divergence of curl is 0. And then how to take the Laplacian? For a scalar, it is divergence of gradient, and for a vector, we have to take the Laplacian of each and every component. मैथ्स में भी बेटा देखो यूज हो जाता है आयुष, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है ना, ये मैथ्स में भी मैं तो कवर करता हूँ, मैथ्स में भी ये कन्वर्जन काम में आ जाता है बहुत सारे सवालों में, ठीक है, क्योंकि मेनी अ टाइम्स बेटा क्वेश्चन इज सच दैट इट इज नॉट इजी टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, एंड देयर वी यूज अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, ठीक है. Now beta we saw solenoidal and irrotational. Solenoidal माने divergence 0, irrotational माने curl 0. Irrotational only, divergence non-zero but curl 0. Only solenoidal, divergence is 0 but curl is non-zero. And neither solenoidal nor irrotational, that means both are non-zero. This is used in an electromagnetic wave. Then we saw the matrix for conversion. I told you how to use the conversion. X is rho cos phi, y is rho sin phi, z does not depend on rho and phi. Then we differentiate this with respect to phi. So minus sin phi cos phi is 0, and z is same as z. So 0, 0, 1. Then in Cartesian, spherical, x is r sin theta cos phi. Differentiate with respect to theta cos phi. Y is r sin theta sin phi. Differentiate with theta cos theta sin phi. And z is cos theta, differentiate with theta minus sin theta. Then differentiate with respect to phi, keep theta 0, so minus sin phi, cos phi and 0. Okay. Now we will talk about the locus in different type of coordinate system. How different figures are created based on a different condition. So suppose beta I want to draw a line parallel to x-axis. In such a case, the y and the z coordinate will be fixed and x coordinate will vary along the line. So when two coordinates are fixed and one coordinate is variable, you get a line parallel to the third coordinate. अगर दो coordinate fix हो जाएं, एक variable रहे, तो तीसरे वाली axis के parallel line मिलती है. So when you want parallel to y, keep x and z fixed, keep y variable. When you want a line parallel to z, keep x and y fixed, z variable. So now how to write the equation of a line in 3D? If the line passes through 2 points, x1, y1, z1 and x2, y2, z2, you write x minus first coordinate upon difference of x coordinate, x2 minus x1. Y minus first coordinate upon y2 minus y1. Z minus z1 upon z2 minus z1 is t. Now t will vary from 0 to 1 if you are just going from x1, y1, z1 to x2, y2, z2. अगर आपकी लाइन सिर्फ पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 तक बनाई गई है, तो t आपका 0 से 1 तक ही जाएगा. तो x, y, z are linearly dependent on t. Now, when you talk about surface, just I told you in a line, one coordinate varies, two are fixed. Similarly, when you want to draw a surface parallel to one of the three planes, either x, y, y, z or xz, you keep two coordinate variable and third coordinate fixed. अगर आपको एक प्लेन बनाना है, किसी भी प्लेन के, किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल, जैसे एक्स वाई के, वाई जेड के, एक्स जेड के, तो एक कोऑर्डिनेट फिक्स करो और दो वेरिएबल रखो. So when you fix x coordinate, y and z are variable, you get a surface parallel to yz plane and the normal direction is the constant coordinate. जो कांस्टेंट रखे हो ना कोऑर्डिनेट, वही डायरेक्शन आपकी नॉर्मल डायरेक्शन बनती है. Okay, that becomes the normal direction. Then beta, if
y is constant, x and z are variable. देखो यार, मैं RIB के अंदर तो दे रहा हूं फॉर्मूला लिस्ट, और दूसरी बात मेरे भाई, ये शॉर्ट नोट्स तो आप लोग भी बनाओगे ना। मैं सारे फॉर्मूला कलेक्ट करके एक पूरी किताब बना करके कैसे दे दूं ऋत्विक भाई? चाहे पेड बच्चे हो, चाहे आप यूट्यूब स्टूडेंट हो, लेकिन ये तो पूरी बुक लिखने वाली बात हो गई ना, कि सारे फॉर्मूलाज की एक बुक लिख दूं। हो सकता है मैं लास्ट में यूट्यूब के लिए कोई इनिशिएटिव ले आऊं फॉर्मूला रिवीजन का। बाकी इस चैनल पे फॉर्मूला सीरीज के लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हो। लेकिन इतना कोई आसान थोड़ी है कि आप बोलो सारे सब्जेक्ट के सारे फॉर्मूला सर एक जगह लिख करके हमें एक बार में दे दीजिए। How is it possible that easily? So now y is constant, x and z are variable. So you will get a plane parallel to xz plane and the normal direction is y cap. ठीक है? और देखो, अगर फॉर्मूला की बात करें ना बेटा, तो फॉर्मूला लिस्ट कहीं ना कहीं ओवररेटेड होती है। कैसे? अब फॉर्मूला लिस्ट में ये सब तो आएगा नहीं। क्या ये सब जानकारी जरूरी नहीं है? जरूरी है। बट विल इट कम अंडर फॉर्मूला? नो, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, राइट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती हैं। अब मैंने मान लो फॉर्मूला में क्या बताया आपको, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल बता दिया, ठीक है। मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दिया। क्या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आएंगी? नो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, like they are not a formula, right? Then beta, when you talk about the coordinate system, उनका visualization is not a formula. Yes, उनका differential length, area, volume can come under formula, but does the visualization come under formula? No, it will not come under formula. Similarly, suppose you are learning how to do the line integration. Line integration does not have any formula. It is a proper method, step by step procedure कि लाइन इंटीग्रल कैसे निकलता है, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो फॉर्मूला तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाएंगी अगर हम सिर्फ फॉर्मूलाज पे बात करेंगे। इसलिए रिवीजन के अंदर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, फॉर्मूला, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लेने से बात नहीं बनती है, क्योंकि कंसेप्ट तो फिर भी रह गए अधूरे। Now, if z is constant, xy is variable, you get a plane parallel to xy plane and the normal direction is the z direction. So remember, for any surface parallel to a plane, two coordinates are variable, one is constant and the constant coordinate tells you the direction of the normal. And if all three coordinates are variable, you will get a three-dimensional solid. Now, how to write the equation of a surface? The equation of a surface is written as r dot n cap equal to k, where r vector is the position vector for any point lying on the plane, n cap is the unit normal vector to the plane, k is the distance of the surface, that is the perpendicular distance from origin. Now suppose I take a plane parallel to xy plane. The normal direction is AZ. This is the normal position vector of a point x, y, z. x, y, z का position vector कैसे लिखोगे? x ax plus y ay plus z az minus 0 0 0. So that is the position vector. Now r dot n. What is r dot n? ax dot az 0. Y dot z 0, z dot z is z. So it is z. So z r dot n is z, r dot n will be c. So that is z equal to c. इस प्लेन की इक्वेशन क्या थी? z equal to c थी ना? तो r dot n is z and z equal to c, therefore r dot n is c. ऐसे लिखा जाता है। हाँ, ईसी वाले बच्चों को भी इलेक्ट्रिकल का ईएमएफटी करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स ईसी में है। ये चैप्टर छोड़ के वो थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज द एरिया वेक्टर। ये मैंने आपको बताया ही था बेटा, व्हेन यू हैव अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एरिया, इट इज नोन एज एरिया वेक्टर। whenever the area is oriented, that is the border of the surface has arrows, has a particular direction, then how to compute the direction of area vector? We curl the fingers of right hand in the direction of the curve. The thumb will give us the direction of area vector. सीधे हाथ की उंगलियों को कर्व के डायरेक्शन में घुमाइए, अंगूठा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। So when you are taking a plane parallel to yz plane, the area vector will be plus minus ax.
If the plane is parallel to xy, area vector will be plus minus az. And when the plane is parallel to xz, the area vector will be plus minus ay. Now, when you talk about cylindrical beta, if you keep rho and phi constant and z varies, so you will get a line parallel to z. देखो, distance from origin is fixed, angle is fixed, then you get a line. If phi and z are constant but rho is variable, that is distance from the origin is varying, so rho is varying, but z is fixed. So you pick this line up by a height z. आपने ये लाइन बनाई जिसमें रो वेरी कर रहा था और इसको ऊपर ले जाके रख दिया कितनी हाइट पे, z हाइट पे, where z is constant. ठीक है. हाँ, जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाए दोबारा क्या बना के करेंगे अंकित भाई. Now if rho and z are constant, phi variable. So if phi varies from 0 to 2 pi, you get a circle of radius rho. But to include z also, we will lift this circle by a height z. इस सर्कल को ऊपर रख दीजिए, कितना ऊपर, z हाइट पे रख दीजिए. Now if rho and phi are also variable, z is constant. So if you start varying rho, you will be able to cover the interior of a circle. कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपने बोला रो फिक्स है तो सर्कल आ रहा है. नाउ इफ आई से रेडियस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, so I will be able to cover the interior of a circle of radius a, और I will get a disk of radius a. अब सर्कल के अंदर का हिस्सा भी इंक्लूड हो गया, मुझे डिस्क मिल गई. If phi and z are variable, rho is constant, so I will get a hollow cylinder. That is the border of a cylinder because radius is fixed. If rho and z are variable, phi is constant, here rho is varying, and this way z is varying, so I get a plane. मेरे को क्या मिल गया, एक प्लेन मिल गया. जैसे एक पेपर को रख दो, ऐसे समझ लो, जैसे मेरा फोन है ना, इस टाइप से आप रख दो, इस टाइप से आपका प्लेन बन रहा है. तो इन दिस डायरेक्शन रो इज वेरिंग, वर्टिकली z इज वेरिंग, so that way you get a plane. Now in spherical, if r theta is fixed, phi is variable, I will get a circle because radius is fixed, this angle theta is fixed, phi is varying from 0 to 2 pi, circle. If r phi is fixed, theta is varying because theta varies from 0 to pi, I will get a semicircle, not a full circle. Now theta phi fixed, r is variable, I will get a straight line because r is the distance from origin. If the distance from origin varies, I will get a straight line. If r is fixed, theta phi are variable, I will get a hollow sphere. That is the outer surface of a sphere because for a sphere, radius is constant. If theta is fixed, r phi are variable. So here r is varying. For every radius, phi will vary from 0 to 2 pi. हर radius के लिए phi 0 से 2 pi तक vary करेगा. So I will get a cone. That is a hollow cone. If phi is fixed, r theta are variable, instead of getting a semicircle, I will be able to cover the interior of the semicircle or I will get semicircular disc. मुझे बाहर बाहर का semicircle मिलने की जगह अगर रेडियस 0 से a तक वेरी कर जाए तो बेटा जी मुझे semicircle के अंदर का एरिया भी मिल जाएगा. That is a semicircular disc. If all three vary, it will be a solid sphere. अगर तीनों कोऑर्डिनेट वेरी करोगे तो you will get the interior of a sphere as well. That is solid sphere. मास्टर जॉन भाई, जैसा मैंने बोला जैन 12 से हमारा ECE का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा और गेट 2027. ठीक है, चलिए. Now beta, today we are going to talk about the vector integration. So for vector integration, the most important integration is the line integral. Now what is line integral? Whenever I take a vector field and I take the component of the vector field along a curve and integrate that component, it is called line integral. मैं एक वेक्टर फील्ड लेता हूं, उसका प्रोजेक्शन, उसका कंपोनेंट ले लेता हूं एक कर्व के अलोंग, यानी कि कर्व के टेंजेंट के अलोंग, और फिर उस कंपोनेंट को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं
that is also called as the line integral. थीटा ऑल्सो वेरीज इन लास्ट केस. नहीं बेटा, थीटा लास्ट केस में वेरी नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट अलग से लिखी है. ठीक है, कि अगर ऑल थ्री वेरी करेंगे. पहले देखो जब सिर्फ थीटा वेरी किया था, व्हेन ओनली थीटा वाज वेरिंग यू वर गेटिंग सेमी सर्कल ऑफ फिक्स रेडियस. नाउ यू आर वेरिंग द रेडियस, सो यू आर कवरिंग द इंटीरियर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑल्सो, तो यू गेट सेमी सर्कुलर डिस्क. ठीक है, हाँ जी. So now what is the open curve beta? Open curve is a curve which starts and ends at different point. What about a closed curve? It starts and ends at the same point. It will have certain orientation like anti-clockwise. Now whenever you write line integral on a closed curve, you place a circle on the integration sign to indicate that the curve is a closed curve. Now every closed curve encloses a certain area or a surface. Closed curve के अंदर area निकाला जा सकता है, not in open curve. Like if I give you this curve beta, can you find the area? No. But if I give you the rectangle, can you find the area? Yes. So closed curve helps you find the area or encloses an area, but not an open curve. Open curve में कभी भी area नहीं देखा जा सकता. Now, what is the line integration? As I told, integral of a vector field component when you take it along the tangent to a curve. ठीक है, कंपोनेंट जब लोगे एक वेक्टर फील्ड का कर्व के टेंजेंट के अलोंग, उसके इंटीग्रेशन को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल. So you write it as integral f dot dl. dl vector is nothing but the small length whose direction is tangential to the curve. So dl vector is differential length directed along tangent to a curve. Okay, it is directed along tangent to the curve. Now beta, line integral over a closed curve for a conservative field or a irrotational field is always 0. अगर फील्ड कंजर्वेटिव या इररोटेशनल है तो लाइन इंटीग्रल जो आएगा वो 0 आता है. जस्ट अ मोमेंट. Okay. तो बेटा, if the curve is closed and the vector field is conservative यानी कि irrotational, the line integration will always be 0. Now what is a conservative field? The conservative field says that the work done by the vector field is independent of the path, or the line integration is independent of the path. So if this f vector, these arrows are a vector field, I want to integrate this vector field from point A to B. If this is a conservative field, then it does not matter how I go from A to B. The line integration will depend on the end points of the curve,
नॉट ऑन द पाथ टेकन बाय द कर्व। कर्व किस रास्ते से जा रहा है मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स आपके क्या हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड अ फाइनल पाथ। So now if you take a closed curve beta, the integration on the both the curve will be same. But one integral is from a to b, other is from b to a. So both integral will be equal and opposite. Net integration will be 0. And that is why we say over a closed curve, line integral of a conservative field is 0. समझे? C1, C2 अलग अलग कर्व हैं बट इंटीग्रेशन सेम आएगा, बट एक का इंटीग्रेशन ए से बी है, दूसरे का बी से। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट्स आप रिवर्स करते हो तो माइनस साइन आता है, इसीलिए C1 C2 का इंटीग्रेशन आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, नेट आएगा 0। नाउ व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड वेयर द कर्ल इज 0? You also know one null identity, that curl of gradient is 0. What this specifies that if the vector field is conservative, we should be able to write the vector field as a curl of a scalar field. अगर आपकी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 है, माने इसको किसी फंक्शन के ग्रेडियंट की तरह से लिखा जा सकता है। You should be able to express it as the gradient of some scalar field. So line integral depends on the path, depends on initial and final point, independent of the path. Line integral over closed curve is 0, curl is 0, and there will be a scalar potential function such that vector field is gradient of the scalar function. So vector field should be, we should be able to write del phi by del xi, del phi by del yj, del phi by del zk. So how to find this scalar function, sir? Very easy. तो देखिए, you take the x component of the vector field, equate it to del phi by del x, integrate with respect to x. Take the y component, equate it to del phi by del y, integrate with y. Then take the z component, equate it to del phi by del z, integrate with respect to z. So you will get 3 integrations. You take union of all the terms. Union माने you do not count the repeated terms twice. जो भी terms इसमें common आ रही होगी इंटीग्रेशन में, उसको एक ही बार काउंट करिएगा, 2 बार नहीं. And when you take the union, you will be able to get phi. ठीक है? And once you are able to obtain phi, then the line integration is nothing but evaluate phi at the final and the initial point. अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, एक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो आप फाई निकाल लीजिए, फाई में इनिशियल और फाइनल पॉइंट पुट करके, जस्ट जैसे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यू फाइंड द इंटीग्रेशन. तो नाउ बेटा, इफ यू आर कैलकुलेटिंग अ ओपन इंटीग्रल, if the curl of f is 0, it is independent of path. If the curl of f is non-zero, it will be dependent on path. If it is independent of path, choose the path along axis one by one, each coordinate varies. That is, first I will vary the x coordinate, dl will be taken as dx ax. ठीक है? इसमें क्या होगा? Like you take this. One by one you vary each coordinate. So basically you are breaking one integration into 3. You can choose a path, है ना? Because beta it is independent of path, you are free to choose a path. Or you choose a straight line path that connects the initial and final point, or you use a potential function. Okay? But if curl is non-zero, it is path dependent. Either you directly integrate or you parameterize the curve. What is the meaning of parameterization? Where along the curve x, y, z coordinate are expressed as a function of a new variable t. एक नया variable t ले लेते हैं. Like if it is the case of a circle, you can write x in terms of y or y in terms of x. In first quadrant, both x and y are positive. In second, x negative, y positive. In third quadrant, both are negative.
in fourth quadrant x positive, y negative. Or else beta, you can treat a circle as x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. मैं आपको समझाता हूं. जैसे देखो, ये एक लाइन इंटीग्रेशन मुझे निकालना और ये मैंने एक पाथ दे दिया. What is this path? This path is a circular arc in the first quadrant which goes from 3, 0 to 0, 3. So what did you do? In the first quadrant, y can be written as root r square or a square minus x square. ये कर सकते हो. Now here radius a is 3. So root 9 minus x square. So y square is 9 minus x square. 2x, y is root 9 minus x square. X square is x square, or you can do x square is 9 minus y square. 2xy, x is root 9 minus y square. Now beta, when you move from A to B, y coordinate goes from 0 to 3, but x coordinate goes from 3 to 0. X coordinate 3 से 0 जा रहा है. Now integrand is same. Except x and y, the function is exactly same. But the limits of two integration are opposite, which means both integration will cancel each other. इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन देखिए ना यार, क्या फर्क पड़ता है x लिखा या y. सर आपने x को y में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज दिस इज dy. यहां y को x में क्यों किया? बिकॉज दिस इज dx. नाउ integrand is same in both the integration, but limits are reverse of each other, so net integral is 0. Okay. Next beta, other thing, first you calculate the curl of this. Now the curl comes out to be 0. If the curl is 0, vector field is conservative, line integral is independent of the path. So you can choose any path, you should be able to get the same result. So how to choose? First I will move along the x-axis. X will vary from 1 to 0. 3 to 0, y will be 0. So along x-axis, dy is 0, dl is dx ax. So f dot dl is this. Now y coordinate is fixed as 0. यहाँ y coordinate fixed as 0. So if y is 0, this dot product becomes 0. Next, second, I move along the y-axis. Along y-axis, x is 0, y goes from 0 to 3. So dl is dy ay. So when you take dy ay, then you will take this factor because this is j cap, है ना? This will give you the dot product with y. मेरी बात को समझिएगा. ये जो इंटीग्रेशन था ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, this into I cap plus this into j cap dot dxi plus dyj. अब आप खुद ये सोचिए, from this dot you will get I dot I, y square plus 2xy dx, j dot j, x square plus 2xy dy. Now when you are saying I am only taking dyj cap, you are not taking this, you are moving along y-axis. So I dot j will be 0, so you will get this x square plus 2xy dy. समझे? आपको second terms का dot मिलेगा ना, x square plus 2xy dy. Now here x is 0, so x square plus 2xy is 0. Again the integration is 0. So 0 plus 0 is, okay. Straight line method, you can choose the path as a straight line going from A to B. How to write the equation? X minus 3 upon 0 minus 3, second point minus first point. Y minus 0 upon 3 minus 0, second minus first is t. So x will become 3 minus 3t, y will become 3t. So now you can write dy as dy by dt into dt minus 3 dt. dx as dx by dt into dt. So it is 3 dt. It is 3 dt. एक सेकेंड, y होगा 3 dt, एक्चुअली x होगा minus 3 dt. ठीक है? Now in this integration, y is 3t, x is 3 minus 3t, y is 3t, dx is minus 3 dt. Then x is 3 minus 3t, x is 3 minus 3t, y is 3t, dy is 3 dt. Now this integration is a function of t, where t goes from 0 to 1. Again you get 0. Again you are getting 0. The third method says the potential method. For potential method beta,
This is my vector field. The x component can be written as del phi by del x. So del phi by del x is y square plus 2xy. Integrate with respect to x, xy square plus x square y. Then this is the y component, which is del phi by del y. Integrate with respect to y. So x square y plus xy square. Both are giving the same result, that is phi. You can add c also. Now the line integral is phi at final point minus initial point. Initial point is 3, 0, final is 0, 3. So at final point you get c. At initial point also you get c. So the difference is 0. ये सारे तरीके हैं बेटा लाइन इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के. बोलो इसमें से कोई भी मेथड अगर ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ. Beta, this is a paid course. We are releasing 2 subjects on YouTube, Power Electronics and EMFT. For all the subjects, you can go to our website, ExamDost.com, and there you can go to the GATE live courses section. You will find the Umeed batch for electrical, Unnati batch for EC. Okay? हाँ, कह सकते हो. Yes, both statement true है. डेल क्रॉस एफ 0 है तो कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस एफ 0 है. लास्ट वाला कंजर्वेटिव में ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन वाला कंजर्वेटिव में ही लगेगा, एक्सेस वाला भी कंजर्वेटिव में ही लगेगा, बिकॉज देन यू आर नॉट कंसीडरिंग द पाथ. ठीक है. बट ये जो शुरुआत वाला इंटीग्रेशन था ये सब जगह लगेगा, बिकॉज यहां पे आपने पाथ के हिसाब से लिया. यू कैन ऑलवेज गो बाय पाथ, बट इफ द इट इज कंजर्वेटिव you can decide the path yourself. Now, how to take the parameterization for a circle? X coordinate is x naught plus r cos theta. Coordinate of center plus r cos theta. Y coordinate is y naught plus r sin theta, where theta varies from 0 to 2 pi. What if it is a ellipse? X is x naught plus a cos theta. Y is y naught plus p sin theta. Theta goes from 0 to 2 pi. Now, if it is an arc like this, then theta will go from 0 to pi by 2, because x-axis is theta 0, y-axis is 90 degree. So, you can even take this parameterization into the integration. ये भी आप लेके जा सकते. Next is the surface integration. Surface integration बेटा, second method repeat. कौन सा वाला कह रहे हो? अलोंग वाई एक्सिस. ये वाला कह रहे हो? देखो जब मैं वाई एक्सिस पे जा रहा हूं भाई, तो y is 0 here, y is 3 here, and x कोऑर्डिनेट रिमेन्स 0. तो हमारा जो dl है वो सिर्फ dy ay है. अब इधर आ जाओ, ये हटा दो dxi, सिर्फ dy j लो. तो फर्स्ट i cap into j cap is 0. J cap into j cap, you will get x square plus 2xy dy. X square plus 2xy dy. Now x is 0. So this is 0, this is 0. So it will come out as 0. Relevant तो है बेटा, 5 to 6 marks का आता है ये गेट के अंदर. If conservative, we can't say exactly curl is 0. Even if it is non-zero, there is a chance integration. कंजर्वेटिव है तो कर्ल 0 आएगा, बट अगर कर्ल नॉन जीरो भी आ रहा है, अगर नॉन कंजर्वेटिव भी है, तो भी इंटीग्रेशन 0 आ सकता है. ये बात सच है. ठीक है. हम ये नहीं कह सकते इंटीग्रेशन नॉन जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव ही होगा. नो, फॉर नॉन कंजर्वेटिव ऑल्सो समटाइम्स द इंटीग्रेशन मे बी 0, बट फॉर कंजर्वेटिव डेफिनेटली द क्लोज लूप इंटीग्रेशन विल बी 0. ठीक है. Now, what is surface integration, beta? We have a surface. We divide the surface into small blocks. Each block has a area vector perpendicular to the surface. So, when you take the component of the vector field along the area vector or along perpendicular to the surface, and you integrate that component. So, now we are integrating the component of the vector field perpendicular to a surface. That integration is called, as surface integration. So you are doing j dot ds vector. So you are taking the dot product.
Dot product gives you the component in the direction of some vector. Dot product से क्या निकलता है? किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट. तो J dot ds will give you the component in the ds vector direction that is perpendicular to area. Now beta, when you integrate this, you get the surface integral. Now how to find surface integration? Find the normal direction. Find ds vector along normal direction. Suppose normal direction is AR cap. So yesterday I taught you the differential area in AR cap is r square sine theta d phi AR cap. Then compute this. Integrate with the limits on the required coordinate. ठीक है? जैसे if you are getting d theta d phi, you will put the limits in terms of theta and phi. Theta and phi. So surface integration is used to calculate the flux of a vector field. Flux means the amount of flow. Suppose I want the flux of a water. It means how much water flows through a particular area. Now solenoidal field mane the divergence is 0. If the divergence of a vector field is 0, just like we said when the curl is 0, line integral is independent of the path. Similarly, when the divergence is 0, the surface integration is independent of the surface. It depends only on the boundary of the surface. जैसे if you are taking a hemisphere, it will only depend on this circle. It does not depend on the surface. इस सर्कल के बीच में कौन सा सरफेस बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है? तो इफ इट इज सोलेनॉइडल यू कैन राइट इट एज अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. जैसे आपने बोला ना अगर कर्ल 0 है तो वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर. सिमिलरली इफ डाइवर्जेंस इज 0, वी नो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, तो B कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस A. अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है तो वेक्टर फील्ड किसी और वेक्टर फील्ड के कर्ल की तरह लिखा जा सकता है. वेयर ए वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है? चलिए, लास्ट इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन. वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ अ स्केलर फंक्शन. डीवी इज स्केलर, so you have to take a scalar function and you have to do the triple integration. Now we come to the vector integral theorems which simplify the effort of integration. So first is the Gauss divergence theorem. So suppose beta you are calculating a surface integration over closed surface. Closed surface mane which has a certain volume inside. You can convert it to the volume integral del dot A dv. But the condition must be surface must be closed and A vector must be continuous and differentiable inside the volume because divergence is derivative. Divergence is derivative. So if you are taking derivative of a function, the function should be differentiable. Differentiable तो होना चाहिए ना. So this V is the volume enclosed by the surface S. Okay. तो यानी कि ये जो डाइवर्जेंस है ये किसी भी पॉइंट पे वॉल्यूम के अंदर इंफिनिटी नहीं जाना चाहिए. तो सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r have centered at origin. So at origin this vector field becomes infinity. You cannot apply the divergence theorem. आप वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम है वो एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है. अब ओरिजिन पे वेक्टर फील्ड ही इनफाइनाइट चली जा रही है, माने इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल. ठीक है? इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल. So the divergence of, gradient of 1 by r is minus 1 by r square r cap, and divergence of r cap by r square is 4 pi delta q bar. Delta q bar is the 3-dimension direct delta function. What is direct delta?
जो आप इम्पल्स पढ़ते हो ना सिग्नल में डेल्टा टी, दैट इज डिराक डेल्टा. बट नाउ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन r is in 3 dimensions, so it is called as 3D Dirac delta function. So this divergence of r cap by r square is 0 at all points except origin. ये डाइवर्जेंस 0 ही आती है सिवाय ओरिजिन के. तो एट ओरिजिन इट इज इनफाइनाइट, एट ऑल अदर प्लेसेस इट इज 0. ठीक है. Now next is the Stokes theorem. If you are calculating the line integral over a closed curve, now closed curve always encloses the area, so you can convert it to a surface integration of the curl of the vector field over the surface enclosed by C. But again, A must be continuous and differentiable. Curl is also a derivative, so if you are taking derivative, the function should be differentiable. समझे. डेरिवेटिव लेते समय ये बहुत जरूरी है कि कर्ल आपका या डाइवर्जेंस लेते हुए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. आरआरबी जेई वाले पढ़ तो सकते हैं बट ज्यादा काम का है नहीं. अब देखो जो भी चीजें मैंने बताई हैं, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज बेटा, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू. चलिए लेट्स कम टू द डेली क्विज. लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 टू 1 1. आइए बनाते हैं. Now when you are taking from 0 0 to 1 1, देखिए t varies from 0 to 1. So that is how you integrate. Okay, that is how you integrate. Very good Vinay bhai. चलिए next. Which of these field is conservative? Which of these is conservative? Answer is D. Okay. Basically, the curl must be 0. So this will be k cap del by del x of x minus del by del y of 1. This will be k cap del by del x of minus x, that is minus 1. This will be del by del x of y, that is 0, del by del y of x. So answer is D. ठीक है, दोनों ही केसेस में A और C में 0 आएगा यानी नल वेक्टर आएगा. नेक्स्ट, the surface integration over the surface z is 0, x and y are varying from 0 to 1. ठीक है, let me show this surface to you beta. Z is fixed, x and y are varying from 0 to 1. Can anybody tell me if z is fixed, then this surface is parallel to xy plane.
Now because z is 0, so this is actually xy plane. So the normal is az cap. Okay. For az cap, the area vector is this. Yeah. लॉजिक समझ में आया कैसे निकालते हैं सरफेस इंटीग्रेशन भाई? आंसर इज 1. Using the divergence theorem, you have to tell the surface integration of this over a sphere of radius r. आपको इसका सरफेस इंटीग्रेशन बताना है ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. ओरिएंटेशन मेंशन नहीं होगा तो वी विल एज्यूम इट टू बी एंटी क्लॉकवाइज बेटा. Okay. So 3 dv तो 3 into 4 by 3 pi r cube. Answer will be A, 4 pi r cube. चलो next, what is the curl of this vector field beta? What is the curl of this vector field? तो आंसर इज 0. वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं बेटा, दिस इज अ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. नाउ आर वेक्टर गोज रेडियली आउटवर्ड्स. It does not curl or it does not circulate, and hence the curl is always 0. So answer will be null vector. Very good. For Stokes theorem beta, apply the Stokes theorem over a circular path of radius r.
What is the closed loop integration of f dot dl over a closed path circle of radius r centered at origin? You take ये भी बोल दिया it is centered at origin. Find the closed loop integral using the Stokes theorem. Curl of f, if you go by the determinant method, circle is in xy plane. So ds vector will be dx dy k cap. Now I am converting it to a surface integration. K cap dot k cap is 1. So the integration will be like this. So 2 into area. 2 pi r. Very good, everyone. See. Which field is solenoidal? Which of these is solenoidal? बताइए. This is actually a MSQ. Which of these is solenoidal? बताओ भाई. B and C. Solenoidal माने divergence is 0. So check it should be B and C. Very good. A के लिए तो बेटा divergence जो आएगा वो 1 plus 1 आ जाएगा. That is 2. So answer cannot be A, Aniket bhai. Now which statements are true for a conservative field? This is a MSQ. कौन सी स्टेटमेंट सही हैं एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए? बोलिए. Closed curve line integration 0, curl is 0, f is gradient, always solenoidal. नहीं भाई, सोलेनोइडल का मतलब होता है डाइवर्जेंस 0 होना. गलत है. ए बी सी आएगा. पक्षी जी. सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट डाइवर्जेंस थ्योरम. डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में क्या क्या करेक्ट है बताइए. It relates the surface integration to volume, requires a closed surface, valid for Cartesian only, no, applies to any continuous vector field, no, differentiable. It should be differentiable. Okay. So next, which integrations are 0? Which integrals are 0 for conservative field over a closed surface? बोलो भाई, ओवर अ क्लोज सरफेस कौन से इंटीग्रेशन 0 आएंगे? B and D. Because if it is conservative, the curl is 0. ठीक है. This can be 0 for solenoidal field.
ये सोलेनॉइडल के लिए 0 हो सकता है। चल, try this over the closed surface of the sphere of radius r. Find this integration. We need this integration over the surface of the sphere of radius r. It is the area of the sphere 4 pi r square. Very good. Find the surface integral over a square whose coordinates are given. एक स्क्वायर है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिए हैं. Zero zero one. Now 101. Okay, this is 101. 110. Then 010. So what kind of a square is it? ठीक है, this is the square. तो भाई क्या आ रहा है? देखो, if you take a normal over here, the normal will come as a cap. So normal is perpendicular to yz or it lies in the yz plane. So I am making a normal vector. So I can write ds as dy j cap. इसको भी रहना normal. F dot ds is actually written like this. F dot normal ds. Now F dot normal will be 2 plus 3 by root 2 ds. So 5 by root 2 into area.
Now the side of a square is root 2. So what is the area? Area will be root 2 square. 5 root. Simple. Answer is 5 root 2. Okay. नॉर्मल आपका किस डायरेक्शन में बन रहा है? J plus K by root 2. ये वाली लाइन देख लो ना अगर नहीं समझ पा रहे हो. This line is in the YZ plane, so the normal is perpendicular. It goes in the J cap, it goes in the K cap direction. तो नॉर्मल हो गया. चलो नेक्स्ट. I am giving you a vector function. Yeah, this R is actually rho cap because it is the cylinder. So sometimes in cylinder also beta they use the term R instead of rho. So F dot ds over the surface of a closed cylinder. Okay. साइड 1 नहीं हुई ना बेटा, स्क्वायर ड्रॉ करके साइड रूट 2 मिल गई. देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूं. फर्स्ट इट इज आस्किंग अस टू इवेल्युएट ओवर अ सिलेंडर. ठीक है. नाउ सिलेंडर हैज 3 surfaces बेटा. The top surface, the bottom surface and a curved surface. ठीक है. Now the top surface Z varies from +3 to -3. Bottom surface and the curved surface, that is if they are using R, so radius equal to 2. Now the area vector will be, because it is in the radial direction, this is in the Z direction. Like this. So I will name it as 1, 2, 3. Now F dot ds. When area vector is in AZ, so you will take K to Z. जब एरिया वेक्टर AZ में है तो आप Z कैप वाले उठाओ ना भाई. Now Z is 3. At 1 your Z is 3. Now radius varies from 0 to 2. Pi in a circle varies from 0 to 2 pi. So rho square by 2, 2 pi. 12 pi K2. Now, first I will pick up 3 instead of 2. Now the direction is beta minus AZ cap. So the dot product will be minus K2Z rho d rho d5. Now, since Z equal to -3, so same result I will get. Okay, same result I am getting. Now, beta, at 2. Because this is radial, this area vector is radial. K1 by R into R is K1 d5 d. Twelve pi K1. So what do you get total?
12 pi k1 plus 24 pi k2. Okay, that is what I get. Is this correct? Correct. Now it is asking the volume integration of del dot f. समझ में आया भाई? Now divergence del by del rho h2 h3 del by del phi. There is no phi component. Del by del z h1 h2 k2 z. Plus 0 plus k2 rho. That is k2. So this is 24 pi k2. Sir, but this should have been equal based on the divergence theorem. This should have been equal. No, beta. Because the cylinder contains origin. Cylinder contains origin. And at origin, k1 by r will tend to infinity. इसी वजह से. So it is not continuous. ये continuous होगा ही नहीं. तो divergence theorem is invalid. इसीलिए दोनों बराबर नहीं आए. A minute. ये बोल रहे थे स्क्वायर नहीं है यार. ये वाली जो साइड आ रही है ना, 1 आ रही है. यू वर राइट. ये 5 आएगा. So I am giving you a vector here. X square y cube I cap. Okay. चलिए try this. वर्मा जी देखो यार, आप अगर गेट की तैयारी करते भी हो तो आई थिंक कि आपका तो एज क्राइटेरिया निकल गया होगा, बट एससी कैटेगरी में हो सकता. हाँ तो कर लो भाई तैयारी, बट फोकस तो कैसे ना कैसे लाना पड़ेगा ना. बिना फोकस के तो तैयारी भी नहीं हो पाएगी. Now beta, because it is a closed surface, I must calculate the curl. Minus 3x square y square minus 9x square y square.
It is clockwise beta, so the area vector will be inwards. एरिया वेक्टर अंदर की तरफ आएगा. So because it is a closed curve, I am using the Stokes theorem. Now this is the line y equal to x. For double integration na beta, mathematically I have to choose a strip. So y will vary from 1 up to x, while x varies from 1 to 2. Y varies from 1 to x varies from 1 to 2. What is the integration of y square? Y cube by 3. Four x to the power 5 minus 4x square dx. (64 into 4, 256 by 6, 32 by 3, minus 4 by 6 plus 4 by 3. So if I take 6 as the LCM, 252 minus 56. 32.66. Why not DL as DXI plus DYJ ले सकते हो A dot DL करके, ठीक है. But then beta you have to break the curve into 3 parts and then you have to integrate into 3 parts. क्योंकि for all the 3 parts DL will be different. Like here it is varying the y coordinate, so DL will be DYJ cap. Here x coordinate is varying DXI cap. Here both x and y are varying, so DXI plus DYJ. अपर लिमिट पीएसयू की जनरली 26 ईयर्स होती है, 26 किसी की 28 फॉर जनरल कैटेगरी. तो 5 ईयर रिलैक्सेशन से 31 से 33 का एज होगा. Given a vector function, evaluate the integral from 5, 6 to 3, 3 along the path P1, P2 and along the path P1A, P2. एक कह रहा है P1 से P2 डायरेक्टली आ जाओ, एक कह रहा है A से होते हुए आओ भाई. देखो भाई, first let me take the direct path P1 to P2.
So I will write the straight line x minus 5 dl will be minus 2i minus 3j dt. So now f dot dl beta xyi okay. Okay. So 2t, 3t, 6t square minus 12t square minus 12t square 9 into 3 27 15t square. ठीक है सही निकाला हूँ ना 2 into 3 6 into 2 minus 12 इधर 9 into 3 27 then t minus 12t minus 15t minus 27 plus 2 so 54t 54 plus 18 is 72 72 6 into 3 18 36 108 so minus 108 minus 3060 then constant 5 into 6 30 minus 60 minus 60 minus 45 105 105 minus 105 plus 108 now t will vary from 0 to 1 5 minus 18 plus 3 minus 10 एक बारी चेक करो yes minus 10 correct now when I go from P1 to A when I'm going from P1 to A beta dl will be dy j cap ठीक है x is constant at 5 and y comes down from this point is 5 comma 6 3 comma 3 तो y comes from 6 to 3 अब ऐसा मत कहना कि सर नीचे था तो आपने माइनस डी वाई क्यों नहीं लिया दैट इज इंक्लूडेड इन द लिमिट so when I am saying y comes from 6 to 3 obviously it is going downwards अपने आप नीचे आ रहा है तो f dot dl will be how much f dot dl dx minus y square dy now x is 5 15 minus y square dy minus 45 minus 9 plus ठीक है ये 18 आया now when you go from A to P2 only x coordinate changes so you take dxi now here x coordinate varies from 5 to 3 y is fixed at 3 x varies from 5 to 3 xy so integration 9 minus 25 minus 16 sum is minus 6 18 minus 24 it is minus 6 so what can you comment on the conservative it is non-conservative because integration depends on path
है ना, लाइन इंटीग्रल varies with path. If it was conservative, we should have gotten the same result in both the parts. मुझे दोनों में सेम रिजल्ट मिलना चाहिए था अगर ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। मेरे भाई जसवंत, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि तुम गेट में अंडर 100 रैंक ले आओगे। मैं कहूं तुम्हारी रैंक एक्सपेक्टेड से कम आ गई, तुम्हारी रैंक आ गई मान लो 500, तो ये हुआ तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। एक्सपेक्टेड थी ना उतनी रैंक तो कभी आ ही नहीं रही थी। मान लो तुम्हारी तैयारी ही 500 की थी, तुम तो एक्सपेक्ट करके बैठे थे मैं 100 ले आऊंगा, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। तो ऐसी एसी में जो एक्सपेक्टेशन होती है वीआरएमएस आईआरएमएस, वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, उतनी पावर ना तो बनी, ना तो कंज्यूम हुई, ना तो कभी डिलीवर हुई। वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाय कंपेयरिंग विद डीसी दैट पावर शुड बी वी इनटू आई, बट वो मुझे कभी मिली ही नहीं, ठीक है। वो मुझे मिल सकती थी अगर जैसे तुम्हें अंडर 100 रैंक मिल सकती थी, मेहनत अगर करते। तुमने मेहनत ही नहीं की और ब्लेम कर दिया डिस्ट्रैक्शंस को। ऐसे ही हमने उतनी पावर जनरेट ही नहीं की। क्यों नहीं जनरेट की? क्योंकि एल और सी ने फेस शिफ्ट कर दिया, तो हमने बोल दिया एल और सी खा गए, एल और सी उस पावर को खा गए। समझ गए? सिंपल सा तो फंडा है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 02 to 20, 02 to 20, 02 to 20, x will be 2t, -2. What is x plus y? X plus y is 2. Now t goes from 0 to 1, -8. Okay, answer is -8. समझ में आ गया राजेंद्र भाई? मैंने -j क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो चीज लिमिट्स में इंक्लूड हो जाती है। क्वेश्चन 6 में कर्ल ऑफ एफ डीएस से नहीं आएगा आंसर, क्योंकि क्लोज्ड कर्व नहीं है ना बेटा। व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम P1 to P2, इट इज अ ओपन कर्व। व्हेन इट इज अ ओपन कर्व, और अगर कर्ल से कमेंट करना है तो कर सकते हो, बट मेरे को कंक्लूजन निकालना था क्वेश्चन नंबर 5 के आधार पे। तो 5 में हमने देखा P1 से P2 जाने के दो रास्ते हैं, दोनों पे आंसर अलग अलग आ रहा है, तो यानी कंजर्वेटिव तो नहीं होगा ना। कंजर्वेटिव होता तो सेम आता ना आंसर। चलो अगला ट्राई करो जल्दी से। वैल्यू ऑफ डीएल along the curve C. तो डीएल वेक्टर इट शुड बी। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एन एरो कनेक्टिंग द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। तो माइनस आर ए एक्स फाइनल पॉइंट माइनस आर ए एक्स इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट आता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करें वी विल गेट
इस बार आपके पास एक क्लोज्ड कर्व है एंड आई वांट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए ओवर दिस क्लोज्ड कर्व। अब की बार क्लोज्ड कर्व पे लाइन इंटीग्रल मांग रहा हूं भाई। वैल्यू वाई एक्सिस में है कहां पे बेटा? ये देखो ना, ए बी सी डी, तो एक्स में ही तो आए फाइनली, स्टार्ट और एंड एक्स में ही तो हुआ। ए से डी जा रहे हो ना? नाउ लेट्स सी दिस बेटा। I will apply the Stokes theorem. Now it will be dx dt. Now beta, whenever we get a rectangular area, it is always a good news for us because the limits of x and y are independent of each other. डबल इंटीग्रेशन में जब रेक्टेंगुलर रीजन मिल जाए ना, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर बाय 2, 4/3 माइनस 1/3 to 2, तो 3/3। आंसर इज सी। वेरी गुड सुभादीप। हाँ, क्लोज कर्व है इसीलिए स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगा। चलो, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया है आपको अगेन बेटा, ये क्लोज्ड कर्व है ए बी सी डी ए, अगेन इट इज अ क्लोज्ड कर्व, यू नीड टू टेल मी द लाइन इंटीग्रेशन। चलो बनाओ जल्दी से, क्लोज्ड कर्व है। आया भाई आंसर? देखो, अगेन इट इज अ क्लोज्ड कर्व, तो आई विल कैलकुलेट द कर्ल, ये एक्चुअली एफ आई होगा।
Okay. I ठीक है, यही आ रहा है भाई कर्ल sin phi plus rho sin phi I am getting. Let me just check if the same value is coming. So you can say now clearly beta I can see phi varies from 30 to 60, rho varies from 2 to 5. Yeah, rho varies from 2 to 5. Phi varies from 30 to 60. Rho plus rho square by 2. 12.5, 17, 13. 4.94. तो यही आ रहा है 4.9413. वेरी गुड अनिकेत भाई, 4.9413. चल, come to the assignment that I gave yesterday. We need to find the distance between 2 points. So distance is always computed in Cartesian. This is cylindrical. X is rho cos phi, y is rho sin phi. Okay, मैंने यही कन्वर्जन कर लिया. Now PQ will be 2 minus root 3 square, 2 root 3 minus 1 square, 2 minus 4 square. थ्री 3.1849. बोलो भाई, बाकी लोग भी यही आ रहा है 3.1849. Next, given a vector function, if it is irrotational meaning that the curl of f must be 0. So K1 is 1, K2 is 0, K3 is minus 3. 1, 0, minus 3. Find K4 if it is also solenoidal. One.
The derivative of the first term with respect to x is 1. Second term with respect to y, 0. Third term with respect to z is k4. Angle between two vectors at 2, 30 degree, 60 degree, v vector and u vector. अब देखो यार, ये थोड़ा सा लंबा है. Convert spherical vector to Cartesian. ठीक है. Now, why have they given the point? Because the matrix depends on the value of r, theta, phi. Now, how to convert, beta? The vector is 4, 2, -1. You know the matrix. Matrix याद करने का तरीका मैंने बताया है. Derivative with respect to theta. Then derivative with respect to phi. Put theta 0. Okay. Now, beta, we will put the values. Okay, theta is 30, phi is 60. So sin theta cos phi is 1 by 4. Cos theta cos phi root 3 by 4 minus sin phi. Okay, sin theta sin phi sin 30 sin 60. Then cos theta cos phi root 3 by 2 and root 3 by 2 3 by 4. Cos phi cos theta cos 30 is root 3 by 2 minus half. So now can you convert it to Cartesian? Cartesian में convert हो जाएगा बेटा. तो after converting, rest आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं. Then theta will be cos inverse a dot b upon mod a. बना लोगे भाई? बताओ. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके यू विल गेट axi plus ayj plus azk and b vector will be 2i plus 3j minus k. मैं देख लेता हूं इफ आई हैव द आंसर टू दिस, ताकि मैं आपको आंसर. ये आना चाहिए 49.23. ठीक है. और ये जो a वेक्टर है ये भी मैं बता देता हूं. 2.732 i आएगा प्लस 2.732 j आएगा. क्या आएगा? ठीक है, चेक कर लेना. क्लियर बेटा? क्लियर कैसे करना है? Vector function del cross f is 0. Find a scalar potential whose negative gradient equals to f at v. तो ये कह रहा है f is negative gradient of v. तो fx is, आज मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं. तो इट मीन्स del phi by del x. अब इसका पहले कर्ल 0 करके k1 k2 k3 निकालना पड़ेगा.
K2. So K1 is 0, K2 is 3, K3 is 2. एक बारी कंफर्म करो भाई, यही वैल्यूज आ रही हैं. कंफर्म दिस 0, 3, 2. ओके. So del phi by del x is minus fx, which is k1z minus 3y. Now k1z is 0. So phi will be, just a moment. Phi will be minus 3xy. Similarly, del phi by del y is minus fy, 2z minus k2x. K3y plus z. Now take the union of the terms beta. Add a constant. Now 242 is 40. That is given to find constant. 242 3 into 8, 24. 2yz, 2 into 8, 16. Z square by 2. 64 minus 18, 46. लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? इसका सी आ रहा है. बहुत बढ़िया शुभदीप. इसको यार मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये तो आप कर ही लोगे. आपको डेल क्रॉस पी और डेल डॉट पी निकालना है. Now beta, this is 3x square y. This is non-zero. ठीक है. क्या आ रहा है? सी आ रहा है. ये चेक कर लेना, कर्ल भी नॉन जीरो आ रहा होगा. Divergence of r vector is 3 because r vector is the position vector xi plus yj plus zk. Okay. Irrotational k1, k2, k3. Del by del x. यही तो था भी जो निकाले थे बी. ठीक है. सेम एज क्वेश्चन 5 है ना. वन बाय आर स्क्वायर आर कैप divergence over a sphere of radius r. Now beta, L dot f is
1/r² sin theta, L/del r is 0. ये आज मैंने बताया भी था ना, इट इज ऑलवेज 0 एक्सेप्ट एट ओरिजिन. मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ ए. देखो मुझे ये पता है जो 2D वाले होते हैं ना, हाउ टू फाइंड द कर्ल. टेक द डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू x एंड x कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू y. ये डायरेक्ट आप कर सकते हो 2D में. टेक द डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू x एंड x कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू y. ये आज मैं लाइन इंटीग्रेशन में भी काफी यूज किया हूं यार. So magnitude is 0. Express the field in the cylindrical coordinate and the variable. So beta, I want to go from Cartesian to cylindrical. Now the matrix that you have learnt is cylindrical to Cartesian. Okay. But I want to go in the reverse direction, so I need the inverse of the matrix. Now for taking the inverse, it is the orthogonal matrix. Just take the transpose. Cos phi sin phi 0 minus sin phi cos phi 0 0 0 1. Okay. So that means beta here x and y are x and minus y, and outside we have 1 by rho square. ठीक है, 1 by rho square, 1 by x square plus y square. X cos phi minus y sin phi minus x sin phi minus y cos phi, और ये वाली टर्म तो है ही नहीं, तो 0. Okay. Now x is rho cos phi, y is rho sin phi. So the vector will become rho cos square phi minus sin square phi, so rho cos 2 phi. Arrow cap. Here rho cos phi sin phi, rho sin phi cos phi. Yeah. Just a moment. Represent this in the spherical coordinate system, beta.
अब ये मैट्रिक्स से आप लोग कर लेना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव. नाउ सी दिस x vector field is diverging, so curl will be 0, divergence will be non-zero. This is curling, so curl will be non-zero, divergence will be 0. This is curling as well as diverging, फैल भी रही है और घूम भी रही है. तो घूमना इज कर्ल, फैलना इज डाइवर्जेंस. तो डेल डॉट एक्स नॉन जीरो, डेल क्रॉस वाई नॉन जीरो, सी ऑप्शन. ओके, सेम ही आ गया. तो अभी आपने बताया था बी. बस यहाँ पे एक z एक्स्ट्रा है. इफ वेक्टर्स a and b आर कंजर्वेटिव, देन a क्रॉस b, a क्रॉस b विल बी कंजर्वेटिव. ठीक है, A cross B will also be conservative, because if they are conservative, their curl is 0. Then the curl of their cross product is also 0. अगर ये कंजर्वेटिव है, इनका कर्ल 0 है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का कर्ल भी 0 ही आएगा. ओके, so you can do that using the property of the cross product. You will find that the curl of cross product is also 0. Divergence of UA. This is A dot gradient of U. Del dot is 2 plus 3 plus 4. Now we are putting the value 1, 1, 1. (43). तो आंसर इज 43. ठीक है, 45 आ रहा है. फोर, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 8 आएगा. Is 40. आंसर इज 45. So that's it, bacho. Now this is your assignment of the day that you are going to solve, which we will discuss tomorrow. So tomorrow I will start with the electrostatics. Okay, कल electrostatics start करेंगे and we will also discuss this assignment. That clear? Sir, if generated, delivered, consumed VI cos phi, why the government take penalties because of generation is VI cos phi? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ज्यादा पावर जनरेट करना चाह रही है लेकिन कर नहीं पा रही है फाई एंगल की वजह से. अगर आप पावर फैक्टर गिरा दोगे तो जो सिस्टम की कैपेसिटी है, जो एपरेंट पावर है, उतनी पावर जनरेट ही नहीं हो पा रही. तो एक तरह से सरकार पावर कम बना पा रही है, कम. ये हेलो, हाँ, सरकार कम पावर बना पा रही है, कम पावर बेच पा रही है, जिस वजह से उनका नुकसान हो रहा है. ठीक है.
हाँ, अगर कन्वर्ज होगा तो भी डाइवर्जेंस नॉन जीरो आएगा, नेगेटिव आता है, डाइवर्जिंग पे पॉजिटिव आता है। ठीक है बेटा। और आज बच्चों लास्ट डे है ऑफर का, जिसमें आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच पे 70% ऑफ मिल रहा है, और गेट 27 के रिकॉर्डेड और लाइव नए बैचेस के ऊपर आपको 30% ऑफ मिल रहा है। तो गेट 27 के लिए कोड है EB30,